Hi friends, so now NCERT Mathematics class of 10th Trigonometry 8.1 and here is a question number 2. In question number 2 it's given in figure 8.13. In your book it's given like that, figure 8.13. Given find tan P cot R. So it's already given PQR in triangle PQR. PQ is given PQ 12 centimeter, PR 13 centimeter, and QR is not given. So how to find out another one? How to find out the third side of the right angle triangle? We have learnt already the previous classes by the Pythagoras theorem. So by Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. What is the Pythagoras theorem? Is hypotenuse square is always equal to be the sum of the perpendicular square and base square. So in triangle PQR, what is the hypotenuse? PR square equal PQ square plus QR square. So now PR square, it's given already 13. So 13 square, PQ 12 square, and QR we will have to find out it. So there is 169, 144 and QR square. So QR square 169 minus 144 become 25. So QR square root of 25 and we know that square root of 25 is 5. अब now we have all the three we have all the three sides of a triangle PQR. हमारे पास triangle PQR की तीनों sides हैं. Q minus cot R. Cot R is given, it means now you are standing here. If you are standing here, so opposite side of the angle is this one. So PQ is perpendicular and QR is base. But there is cot theta. Cot theta is reciprocal of tan theta, yani base upon perpendicular. So if you are standing here, so this is the base and this is the perpendicular. So base is QR. So your base is QR upon PQ. So now QR upon PQ. What is QR upon PQ? It means 5 upon 12 minus 5 upon 10 become 0. So this is your answer. And now you can check. You can write down these questions and answers. And if you have any difficulties, so comment me. Okay? And अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. तब तक आप इसे नोट कर लें and make it practice continue. Hi friends, so now here is question NCERT Mathematics class 10th Trigonometry exercise 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3. आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में. So now the question is given, if sin A equal to be the 3 upon 4, calculate cos A and tan A. इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले सबसे फर्स्ट वी विल हैव टू ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल. सो हियर इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड sin A is given, it means your main angle is A. So this is A and now B and C. This is a 90 degree angle
and now sin A is given 3/4. ट्रिक तो आपको पता ही है. यस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बम. और इसमें गिवन है साइन थीटा, साइन A. इट मीन्स यू हैव टू यूज द फर्स्ट टर्म. दिस इज साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो इन ट्राइंगल BCA sin A इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर क्या होगा? BC, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ द हेड एंगल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर. सो BC इज परपेंडिकुलर एंड AB इज हाइपोटेन्यूज. But it's given already 3/4. It means the BC is 3 and hypotenuse is 4. So first we have to find out the other side of the triangle. And how can you find out it? By the Pythagoras theorem. पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ये हमने कई बार पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में इन 6th, 7th, 8th, 9th. सो इन ट्रायंगल BCA व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज? AB, because the largest side of the angle is always hypotenuse. So there is AB square perpendicular BC square and base AC square. So AB 4 square, 3 square and AC square. 4 4 is 16, 13. Now AC 16 minus 9, it means 7. So AC is root 7. So now your base is root 7. अब इसकी वैल्यू, नाउ पुट द वैल्यू इन द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन वाज सेइंग कैलकुलेट cos A एंड tan A. आपको कैलकुलेट करना है, वैल्यूज बतानी है cos A एंड tan A की. सो cos A और tan A, cos A किसे कहते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस क्या है आपका? इफ यू आर स्टैंडिंग हियर तो बेस हो जाएगा AC. सो AC अपॉन AB, इट मीन्स रूट 7/4. इफ यू आर स्टैंड tan A क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट मीन्स BC अपॉन AC, इट मीन्स 3/√7. So now this is your answer.